Good morning. Today is 11 April. We are going to solve some more problems on inverse trigonometric function. The first question is prove that tan inverse 6x minus 8x cubed by 1 minus 12x square minus tan inverse 4x by 1 minus 4x square equal to tan inverse 2x. It was in 2010. Second question is prove that tan inverse x plus tan inverse 2x by 1 minus x square equal to tan inverse 3x minus x cubed by 1 minus 3x square, again in 2010. Third question is prove that cot inverse xy plus 1 by x minus y plus cot inverse yz plus 1 by y minus z plus cot inverse zx plus 1 by z minus x equal to 0 in 2015. Fourth one, show that cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 is equal to cot inverse 3 in 2014. And the last question I have taken solution. Solve sin inverse 6x plus sin inverse 6 root 3x is equal to minus pi by 2, again in 2015. Now I am taking first question. First question is that tan inverse 6x minus 8x cubed by 1 minus 12x square equal to tan inverse 4x by 1 minus 4x. प्रूफ क्या करना है? tan inverse 2x. इसमें एक पैटर्न दिखा हमें, उस पैटर्न के हिसाब से पैटर्न क्या है? यू नो tan 3 थीटा क्या होता है? दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. उसी के साथ tan 2 थीटा भी आप जानते हो, tan 2 इज 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो इफ वी टेक as 2x is equal to tan theta, you will get left hand side as tan inverse 3 tan theta minus 8x cube is 2x का whole cube, so it is tan cube theta 1 minus 3 into 4x square, so 3 into tan theta whole square, and minus tan inverse 4x 2 into 2x 2 tan theta by 1 minus 4x square 2x का whole square यानी tan square theta. So from here we get tan inverse of tan 3 theta minus tan inverse of tan 2 theta. Tan inverse tan, so 3 theta minus 2 theta, it is theta. और theta क्या हो जाएगा? Since 2x is tan 2 theta, so theta is tan inverse 2x. Tan inverse 2x, and this is RHS. Okay. Now the second question क्या था? प्रूव करना था हमें. प्रूव दैट tan inverse x plus tan inverse 2x by 1 minus x square tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में तो ये 2 tan inverse x है और ये भी 3 tan inverse x है. सो tan inverse x plus tan inverse 2x 2 tan inverse x becomes 3 tan inverse x and which is equal to 3. बट हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे? टेक LHS. tan inverse x plus tan inverse y, take it as y. So what is tan inverse of x plus y by 1 minus x into y. Okay, so tan inverse, this is x minus x cube plus 2x by 1 minus x square. 1 minus x square, denominator calcium, 1 minus x square minus x into 2x, 2x square. Cancel हो गया. Is equal to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square. That is RHS. Proved. Clear? Third question is cot inverse. Cot inverse xy plus 1
by x minus y plus cot inverse yz plus 1 y minus z plus cot inverse zx plus 1 z minus x, इसे दिखाना है जीरो, प्रूव करना, प्रूव दैट इट इज जीरो, लेफ्ट हैंड साइड. तो वी नो दैट cot inverse x is tan inverse 1 by x. Cot inverse x is tan inverse 1 by x. So this becomes tan inverse x minus y by xy plus 1 को 1 plus xy. फिर नेक्स्ट cot inverse tan inverse y minus z by zy yz plus 1 को 1 plus yz plus cot inverse becomes tan inverse reciprocal of this z minus x by 1 plus zx. Okay. Now this is the formula for what? First one, tan inverse x minus tan inverse y. Second one, tan inverse y minus tan inverse z. Third one, tan inverse z minus tan inverse x. Tan inverse x cancel, minus tan inverse y plus tan inverse y minus tan inverse z plus tan inverse z. What will left? 0. That is right hand side. This is third question. What is the fourth question? Fourth question is cot inverse 7, 8, 15. Cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 be equal to cot inverse 3 equal to cot inverse, ये हमें प्रूव करना है. Again using the same formula. Cot inverse 7 is tan inverse 1 by 7. Cot inverse 8 is tan inverse 1 by 8. Cot inverse 18 is tan inverse 1 by 18. Now use on first two tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse 1 by 7 plus 1 by 8, 1 minus 1 by 7 into 1 by 8 and plus tan inverse 1 by 8 is equal to tan inverse 8, 7, 56, the LCM, you will get 15. Here again 56 is the LCM, 56 minus 1, it is 55 and plus tan inverse 1 by 18. 56 cancel, 5 3 ja and 5 11 ja. So we are left with tan inverse 3 by 11 plus tan inverse 1 by 8, 1 by 18. Again use the same formula, tan inverse x plus y, 1 minus x into y. Now tan inverse 18 3 ja 54 plus 11, 11 into 18, again 11 into 18, 198 minus 3, this is cancelled, is equal to tan inverse 54 plus 11 is 65 by 198 195. Okay, 65 3 ja 3 5s ja, so clear cut it is cancelled. So tan inverse 1 by 3 and which becomes cot inverse 3, that is right hand side proved. And the last question, solution, solve. What is the solution? Sine inverse 6x, sine inverse 6x plus sine inverse 6 root 3x equal to minus pi by 2. सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है. सो फर्स्ट क्या करते हैं, माइनस पाई बाई 2 को ले आते इधर, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज पाई बाई 2 प्लस, इसको आप उधर ले जाओ अगले स्टेप में. यहां से कुछ फॉर्मूला भी नहीं निकल के आ रहा है, माइनस होता तो निकल जाता. माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x, माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है,
तो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है। अब इस साइन इनवर्स को इधर ले आए तो क्या हो गया, साइन ऑफ इनवर्स आ गया इधर, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस 6√3x। नाउ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज cos theta. Okay. Now what is sine of cos x? Cos of sine inverse x. Tell me, what is cos of sine inverse x? It is root under 1 minus x square. Root under 1 minus x square. You can prove it. So it is root under 1 minus 6x का whole square minus 6√3x. Squaring you will get 1 minus 36x square equal to 36 3 is 108x square. Transposing this, 1 equal to 144x square. So x square is equal to 1 by 144 and implying that x is equal to plus minus 1 by 12. Okay. Now here is two values, x equal to 1 by 12, x equal to minus 1. Whenever you find the value of x, once you must check the solution whether the two solutions are the solution of given equation or not. So if we check manually orally 1 by 12, if we put x is equal to 1 by 12, sin inverse 6 into 1 by 12 is 1 by 2, यानी पाई बाय 2 हो गया ये, ठीक, प्लस साइन इनवर्स, इज इट नॉट, अगर 1 by 12 रखते हैं यहाँ पर तो 6 by 1 by 12, 6 into 1 by 12 is 1 by 2 and sin inverse 1 by 2 becomes pi by 6. The value of this is pi by 6, 30 degree, and this is if you place x, replaced x by 1 by 12, again root 3 by 2. Sin inverse root 3 by 2 is pi by 3. So pi by 6 plus pi by 3 is pi by 2. Is pi by 2. And the right hand side is minus pi by 2. So certainly this solution does not exist. What about this? Here it is minus 1 by 2, so minus pi by 6. Here minus root 3 by 2, so minus pi by 3, so minus pi by 6 plus minus pi by 3 becomes minus pi by 2. So this solution is verified. तो आप इसको चेक कर लो, सॉल्यूशन को कम से कम रिजेक्ट और चेक ये करना है. ओके, तो दीज आर द 5 क्वेश्चन ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, ये आपका आज का पार्ट हुआ, और लास्ट में मैं एक डॉक्यूमेंट में आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप रिवीजन के लिए करना. फ्यू क्वेश्चंस फॉर रिवीजन. तो आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मैं दे रहा हूं, आप बनाओ उसको. फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, नए चैप्टर में आएंगे अगले दिन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में. होप यू विल डू quite correctly all the given questions as well as relation function, inverse trigonometric function. The whole chapter concludes only 8 marks. You mean in the board examination, relation functions including inverse trigonometric function, binary operation is not in the syllabus, so don't take. So only 8 marks of the syllabus is covered in these days.